Yes, dear friends, again welcome into this new session. In this session, we will see the compound microscope, then telescope, right? So let us start with the compound microscope. Again, the most important topic from ray optics, that is chapter number 9. So we have the two lenses. First lens is what we call the objective lens, and while the second lens is what we call the eyepiece, right? Yes, next. This is the principal axis. This is the PO, that is pole of the objective, and PE is the pole of the eyepiece. FO is the focal length of the objective. 2FO is by default the center of curvature, right? And similarly, this distances are called the FO, focal length for the objective, right? FE, the focal length for the eyepiece, and the distance is FE, right? Okay, great. Now next, ABB, the object. So now this is the ray diagram. So first you have to draw this ray. This ray is coming parallel. If it is coming parallel, then it has to pass with the focal length FO. So this will go like this. Okay, so this is the first ray. Now the second, it is passing through the P, so it will move without any deviation, and it will move like this along this path. So here we have uh, the image formation due to this first lens. So this is the image A dash B dash due to the first lens. Now this image will work as the object for the second lens, that is the eyepiece. So the ray will move like this. We have to extend the ray along this path. We have to also draw a ray which is passing through the P, which will help us to draw the final image. Yes, so this ray is passing through the eyepiece, and now we have the extended ray like this, and this will give us the final image. Yes, so this is the highly magnified image A double dash B double dash, right? I hope बहुत इसे समझ में आ गया है. And now we have to shift the object AB over here for the LDD, that is the least distance of distant region, right? Great. Also for the derivation point of view, this height is same as this height. Okay. Good. Now next, this is the angle alpha and this is the angle beta. This is the beta angle which is formed by this final image. And the A double dash, this one is the angle formed by the object. Right? Okay. This is the object distance UO. Object take respect distance, object distance UO. This is the image distance BO with respect to objective. Objective ने यहाँ पे image form कराया था. So this should be the object distance, rather, sorry, image distance BO. This is the D, that is least distance of distant region, जहाँ पे हमारा image form होना चाहिए. What is M? L is the distance between the two lenses. So what is objective? The converging lens nearer to the object. What is the eyepiece? Yes, eyepiece is nothing but the converging lens through the which final image has to be seen. Next, both are of the short focal length. Focal length of the eyepiece is slightly greater than that of the objective. Now the angular magnification or the magnifying power. So angular magnification or magnifying power of a compound microscope is defined as the ratio of angle beta subtended by the final image at the eye to the angle alpha subtended by the object ascend directly when both are placed at the distance of least distant vision, that is LDDV. So m is equals to beta upon alpha. As such angles are very small, we can replace beta by 10 beta and alpha by 10 alpha. So we have this one, so 10 beta upon 10 alpha. Now from the diagram, 10 beta is a double s b double dash upon d, and 10 alpha is a double dash and triple dash divided by d, right? So substituting the value, dt will be get cancelled, and we have like this, right? A double dash a triple dash is same as ab, that is object. So now we have the final magnification is a double dash b double dash upon ab. Yes, so we can now multiply this by a dash b dash. So multiply and divide by a dash b dash. So first physical quantity is nothing but the magnification due to eyepiece. Second physical quantity is nothing but magnification due to objective. So in case of compound microscope, the total magnification is multiplication of magnification due to eyepiece and magnification due to objective, that is MEMO. MEMO, you can remember like this. But what is magnification due to eyepiece in the lens? In case of lens, we already know that is 1 minus v upon f.
and as such it is due to IP, so M is equals to 1 minus VE upon FE, right? And now substituting the values, VE फाइनल इमेज कितना डिस्टेंस पे हम लोग फॉर्म कराते हैं, द डिस्टेंस ऑफ लीस्ट डिस्टिंक्ट विजन, एंड क्योंकि वो लेफ्ट हैंड साइड पे फॉर्म होता है लेंस के रिस्पेक्ट में, इट हैज टू बी कंसीडर्ड एज नेगेटिव, so 1 minus minus of d, that is 1 plus d divided by fe, that is focal length of eyepiece, right? Great. ये बहुत अच्छे से ये समझ में आ गया है. Now next, magnification due to objective is equals to minus of VO upon UO. Okay, therefore we have minus of VO upon UO in bracket 1 plus D upon FE. Yes. Since the object is placed very close to the principal focus, तो हमें जो ऑब्जेक्ट को रखना होता है वो एफओ के एकदम नजदीक रखना होता है, एकदम पास में होना चाहिए, इस तरीके का अरेंजमेंट होता है. एंड फाइनल जो इमेज फॉर्म होता है ऑलमोस्ट वो दो लेंस के बीच में जो डिस्टेंस होता है उतने ही डिस्टेंस पे वो फॉर्म होता है, राइट? दैट इज एल पे. Okay. So ultimately, final magnification is minus L upon FO in bracket 1 plus D upon FE. Yes, you have to remember this for the numerical purpose. And if one is very, very small, then minus L upon FO into D upon FE ho jayega. This is for the normal adjustment. What is the normal adjustment? When final image is formed at the infinity, right? When you are doing the derivation, you have to image aside. आप डेरिवेशन लिखते जाओ, इमेज के साथ जो जो हम लोग वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं उसको आप लोग देखते जाइए, तो आपको बहुत ही आराम से डेरिवेशन समझ में आ जाएगा, राइट? यहाँ पे जब आप वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करते हो, यू हैव टू सी द रे डायग्राम, एंड आपने जो इमेज बना के रखा है, राइट, उसका आपके साथ में होना चाहिए. ओके, ग्रेट. लेट अस मूव टू द नेक्स्ट स्टेप. That is the astronomical telescope. Now, this is the astronomical telescope when the image is formed at the infinity or normal adjustment. So we have two lenses, objective and eyepiece. यहाँ पे जो लेंस है उसका पोजीशन रिवर्स हो जाता है. अब जो है ऑब्जेक्टिव लेंस बड़ा हो चुका है, जबकि आई पीस जो है वो छोटा हो चुका है. दिस इज अगेन द प्रिंसिपल एक्सिस. पीओ इज द pole of the objective, P is the eyepiece for the pole for the eyepiece. यहाँ पे अभी आपको क्या किस तरीके से लेंस को एडजस्ट करना होता है, सच दैट फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव मस्ट लाई ऑन द फोकल लेंथ ऑफ द आईपीस, राइट? तो पहले के लेंस एंड दूसरे लेंस की फोकल लेंथ जो है वो दोनों एक दूसरे के ऊपर कोइंसाइड होनी चाहिए, तब जाके ये आपको इमेज अच्छे से देगा. ओके. Now next, because we have to look the objects which are very far away from ourselves, तो क्योंकि हमें बहुत ही दूर की ऑब्जेक्ट को ऑब्जर्व करना होता है, so we can consider the rays are parallel, right? क्योंकि वो बहुत दूर, that is infinity से अगर ये आता है, it can be considered parallel rays like this. Okay, now next. तो यहाँ पे वो कोइंसाइड होगा, एंड अब हम अगेन यहाँ से हम क्या करेंगे, अलग अलग रे को बनाएंगे. तो इस तरीके से कोई एक रे आप ले सकते हो, एंड दूसरा रे को आपको कहाँ से पास करना होता है, P से, that is pole से. तो अगेन ये आपको कहाँ पे इमेज बना के देगा, दिस विल गिव यू द इमेज, फाइनल इमेज एट द इंफिनिटी, राइट? सो दिस विल गिव यू द फाइनल इमेज एट द इंफिनिटी. तो ऑब्जेक्ट भी इंफिनिटी पे है, फाइनल इमेज भी इंफिनिटी पे आएगा, एंड क्योंकि इंफिनिटी पे फॉर्म होगा तो इसका जो साइज है वो बहुत ही छोटा होगा, right? Yes. So final image will be formed at the infinity. The distance, this distance is FO, this distance is FE, and the distance between two lengths is L. So FO plus FE should be equal to L in this case. This is the alpha, object जो angle बनाता है वो. This is the beta, आपका image जो angle बनाता है वो. Right now we will see the magnification. It will be same alpha upon beta upon alpha. Focal length of the objective is much greater than of that of the eyepiece. ये तो clear है. Image जो diagram हमने बना के रखा है, this is very clear. Objective बहुत ही बड़ा लेंस है, so focal length of objective is very very large, and the focal length for the eyepiece, great. Next, the aperture of the objective is very large to allow more light to pass through it. ये भी बहुत ही simple सा है. Angular magnification or magnifying power of a telescope in the normal adjustment is nothing but the ratio of the angle subtended by the image at the eye as seen through the telescope to the angle subtended by the object as seen directly when both the object and the image are at the infinity, right? So magnification is beta upon alpha. Magnification alpha is 10 alpha, beta is 10 beta. So magnification is 10 beta upon 10 alpha. And now substituting the values from the ray diagram, we have Fe into I upon PFE divided by Fe into I
to POFE, राइट. सो FE अपॉन आई कट हो जाएगा, आई कट हो जाएगा. वी हैव FO अपॉन FE विथ नेगेटिव साइन, राइट. जो नीचे की तरफ होगा उसके लिए हम नेगेटिव साइन लेते हैं. सो मैग्निफिकेशन इज नथिंग बट माइनस ऑफ FO अपॉन FE, and FO plus FE is equals to L. This is what we call the length of the telescope in the normal adjustment. I hope बहुत अच्छे से derivation आपको समझ में आ चुका है, right? So let us move to the next derivation, which is again for the astronomical telescope. When image form at LDTV, what is LDTV? At the distance of least this distance of distinct vision. राइट. अगेन ऑब्जेक्टिव जो है वो बड़ा लेंस है, आई पीस छोटा लेंस है. दिस इज द प्रिंसिपल एक्सिस. पीओ इज द पोल फॉर द ऑब्जेक्टिव, पीई इज द पोल फॉर द आई पीस. नाउ इन दिस एडजस्टमेंट एफ एंड एफ जो है वो कोइंसाइड नहीं होगा, राइट. बट किस तरीके से आएगा? ऑब्जेक्टिव का फोकल लेंथ है वो आई पीस के फोकल लेंथ एंड पोल के बीच में रहेगा, राइट. तो आपका लेंस जो है दूसरा लेंस किस तरीके से आएगा? सच दैट उसके फोकल लेंथ एंड पोल के बीच में फोर्स लेंस का जो है फोकल लेंथ आना आया हुआ होना चाहिए, राइट. अल्टीमेटली पहले लेंस की वजह से जो इमेज मिलेगा वो इमेज सेकंड लेंस के फोकल लेंथ एंड पी के बीच में रहेगा, राइट. सो वी हैव FO plus FE. नाउ इमेज इज फॉर्म, इमेज ड्यू टू फर्स्ट लेंस, image due to first lens, that is this one, is formed between FO and PE, right. This is what you have to remember. एंड नाउ अगेन हम लोग दूसरे से रे को फॉर्म करवाएंगे एंड फिर जो है यहाँ से वापस रे को एक्सटेंड करेंगे तो हमें इमेज मिलेगा. नाउ दिस इज द इमेज, फाइनल इमेज AB, राइट. Okay, great. So this is the distance. That is distance of least distinct vision. Normal height should be 25 centimeter. अल्फा था, बीटा था, एंगुलर मैग्निफिकेशन. डायग्राम का 1 मार्क मिल जाएगा आपको, डेफिनेशन का 1 मार्क मिल जाएगा, बाकी का डेरिवेशन का 3 मार्क मिल जाएगा, राइट. सो एंगुलर मैग्निफिकेशन और द मैग्नीफाइंग पावर ऑफ अ टेलीस्कोप इन दिस केस is defined as the ratio of angle beta subtended at the eye by the final image formed at the least distance of distinct vision to the angle alpha subtended by the eye by the object lying at the infinitive and synchronically, right. So ये जो है एक नया ऐड हुआ है, फाइनल इमेज फॉर्म एट द डिस्टेंस ऑफ लीस्ट डिस्टिंक्ट विजन. इतना सा चीज ऐड हुआ है, बाकी डेफिनेशन. Thus, now again magnification is beta upon alpha. Angles are very very small. So alpha is tan alpha, beta is tan beta. Magnification is tan beta upon tan alpha. Again, this is FO upon I, PE upon FO, and FO into I, PO FO. ये तो सेम ही रहेगा. So PO upon FO upon PE upon FO, that is FO upon minus of UE. Right? अब ये जो है FE की जगह आ चुका है UE. Right? So बहुत अच्छे समझ में आ गया है. नाउ यहाँ पे हम लोग यूज करने वाले लेंस फॉर इक्वेशन को. सो व्हाट इज द लेंस इक्वेशन? 1 अपॉन v माइनस 1 अपॉन u इज इक्वल टू 1 अपॉन f. v कितना डिस्टेंस पे, इमेज कितना डिस्टेंस पे फॉर्म होता है? डिस्टेंस ऑफ लीस्ट डिस्टिंक्ट विजन, तो d आ जाएगा विद नेगेटिव साइन क्योंकि लेफ्ट में फॉर्म होता है. u तो u ही रहेगा. सो माइनस ऑफ 1 अपॉन माइनस ue इज इक्वल टू 1 अपॉन fe क्योंकि ये कॉन्वेक्स लेंस है, फोकल लेंथ हैज टू बी पॉजिटिव. ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा. सो माइनस 1 अपॉन डी प्लस 1 अपॉन यू ई मस्ट इक्वल टू 1 अपॉन एफ ई, राइट. और 1 अपॉन यू ई को अगर हम लोग सब्जेक्ट बनाते हैं तो माइनस 1 अपॉन डी सामने जाएगा तो प्लस हो जाएगा, दैट इज 1 अपॉन एफ ई प्लस 1 अपॉन डी. और इसको हम लोग आगे लेके जाएंगे. सो मल्टीप्लाई बोथ द साइड बाय एफ ओ ऑन एंड रीअरेंजिंग, राइट. तो एफ ओ से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो आपको मिल जाएगा एफ ओ अपॉन यू ई मस्ट बी इक्वल टू एफ ओ अपॉन एफ ई प्लस 1 अपॉन डी, राइट. तो यहाँ पे जो है एफ ओ अपॉन एफ ई ये साइड पे बाहर आ जाएगा. फिर इसको भी एफ ई से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर दीजिए तो जो है आपको कुछ इस तरीके का मिलेगा, राइट. डिनोमिनेटर में एफ ई आ चुका है दोनों में. सो एफ ई अब जो है वो बाहर आ जाएगा एंड ऊपर से एफ ओ बाहर आ जाएगा. तो पहला तो टर्म ही बाहर आ गया तो यहाँ पे बचेगा 1. दूसरा टर्म में ऊपर एफ ई बचेगा, नीचे डी बचेगा, तो एफ ई अपॉन डी, राइट. सो दिस इज व्हाट वी हैव द मैग्निफिकेशन. आई होप बहुत अच्छे से आपको ये चीज समझ में आ गई है. एंड यहाँ पे एफ ओ होगा तो एफ ओ अपॉन यू ई, तो यहाँ से मैग्निफिकेशन है हमारा विथ नेगेटिव साइन, और ये जो नेगेटिव साइन है वो यहाँ पे है. यस, यू कैन ट्राई दिस, आपको भी सेम आंसर मिलेगा. Now clearly focal length of the objective must be greater than that of the eyepiece for the larger magnifying power, right? Yes, बहुत ही सिंपल है, ये 1 मार्क का था. Do remember this.
The focal length of the objective must be greater than that of the eyepiece for the larger magnifying power. Also, it is to be noted that in this case, the M is larger than that of the normal adjustment position. तो कौन से केस में आपको मैग्निफिकेशन ज्यादा मिलता है फॉर द ये वाला जो हम कर रहे हैं एलईडी भी किसके कंपैरिजन में नॉर्मल के कंपैरिजन में ओके नाउ नेक्स्ट द न्यूटोनियन टेलीस्कोप रिफ्लेक्टिंग टाइप टेलीस्कोप भी इसको बोला जाता है यहाँ पे हम लोग मिरर का यूज करते हैं सो दिस इज द कॉनकेव मिरर 1 मार्क में पूछा जा सकता है दिस इज द प्लेन मिरर दिस इज द आई पीस रे आएगा फिर वो लाइट को इंसिडेंट किया हम लोगों ने वो इंसिडेंट हुआ फिर वो मिरर के ऊपर इंसिडेंट हुआ फाइनली वो आई पीस से पास हुआ एंड आई से वो पास हो गया now magnifying power what is the magnifying power that is defined as f upon fe right now resolving power of a microscope what is the definition of resolving power of a microscope so the resolving power of a microscope is defined as the reciprocal of the distance between the two objects which can be just resolved while using the microscope तो दो ऑब्जेक्ट की जो इमेज फॉर्म होती है उसको जब हम जस्ट रिसॉल्व कर पाते हैं तो वो जो डिस्टेंस होता है उसको हम लोग बोलते हैं उसके रेसिप्रोकल को हम लोग बोलते हैं रिजॉल्विंग पावर ऑफ माइक्रोस्कोप सो इट इज डिफाइंड एज the reciprocal of the distance between two objects. It is the reciprocal. It is defined as the reciprocal of distance between two objects when objects which can be just resolved when seen through the microscope. Yes, this is the objective length. उसकी इमेज बनी है उसको हम just resolve कर पाएंगे ये है एंगल थीटा so resolving power is defined as reciprocal of this distance. It is also equal to 2 mu sin theta upon lambda. It is equal to 2 mu sin theta upon lambda 2 is number, mu is refractive index, sin theta is this angle, and lambda is the wavelength we are using. So it is resolving power reciprocal of d or 2 mu sin theta upon lambda. Right? Now next. इसका डेरिवेशन नहीं है सो फ्रॉम दिस इक्वेशन वो लैम्बडा के ऊपर डिपेंड करता है वो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के ऊपर डिपेंड करता है वो एंगल के ऊपर भी डिपेंड करेगा एंड नाउ द नेक्स्ट वन लास्ट वन रिजॉल्विंग पावर ऑफ अ टेलीस्कोप रिजॉल्विंग पावर ऑफ अ टेलीस्कोप इज नथिंग बट डिफाइंड एज द रेसिप्रोकल ऑफ द स्मॉलेस्ट एंगुलर सेपरेशन यहाँ पे हमें एंगल मेजर करना पड़ेगा so reciprocal of smallest angular separation between the two distinct objects whose images can be just resolved or can be seen clearly बहुत ही दूर की दो ऑब्जेक्ट जो है उसका इमेज बनेगा उस वो जो इमेज जो एंगल फॉर्म करेगा ठीक है कौन सा एंगल पे वो जो भी एंगल फॉर्म करेगा वो एंगल ऐसा होना चाहिए सच दैट अब दोनों जो ऑब्जेक्ट है उसकी इमेज को क्लियरली देख पाओ ठीक है सो रिजोल्विंग पावर ऑफ अ टेलीस्कोप इज डिफाइंड एज द रेसिप्रोकल ऑफ स्मॉलेस्ट एंगुलर सेपरेशन right? Smallest angular separation between two distinct objects whose images can be seen clearly. So it is the reciprocal of theta or d theta, right? क्योंकि छोटा angle है, so we have used d theta, and it is equal to a upon 1.22 lambda, right? And again, it is depending on the wavelength, it depends on the diameter butt of vessel, and it depends on the uh, objective A, right? Yes. So I hope आपको ये क्लास है बहुत अच्छे से समझ में आ चुका है. If you have any doubt, you can ask me. We will meet in the next class with another chapter. Thank you very much. Thank you.